Proud to be Brand Pakistan has organized a meeting here facilitating brainstorming on China-Pakistan Economic Corridor. Athar Iqbal, founder of the forum, told News Pakistan TV that they have been organizing different events for the last 3 years. Optimistic that feedback received from the business community during the huddle would benefit Cpec, Athar Iqbal said, during the course of meeting it transpired that private sector investment was non-existent. He opined that with the involvement of private sector, better prospects would evolve. Speaking about the brainstorming session on Cpec, Athar Iqbal said, since the entire business community was entrusted, he was looking for somebody who could brief them properly about the corridor. Cpec का जो सब्जेक्ट है वो हमारा मेन फोकस है और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का इससे कंसर्न है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इसको अच्छे तरीके से कोई ब्रीफ करने वाला मिल जाए, तो फिर हमने कमोडोर अकबर नकी साहब जो पाकिस्तान नेवी से हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी। Following the meeting, Commodore Akbar Naki, while talking to News Pakistan TV, said it was a good briefing for the business community and some good results are also expected from it. Terming Cpec as a game changer for the region, Commodore Naki said it will contribute towards the progress of Pakistan. Maintaining that participation of business community is necessary for Cpec's development, he said it will be very advantageous for industrialists who can build infrastructure and develop industries. में इंडस्ट्रीज का बहुत एडवांटेज है, वहाँ पे वो अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आगे चीज़ें जो बननी है उसमें पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का बहुत पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। Terming Gavadir, the main component of Cpec, Akbar Naqi said, we must realize the importance of sea for us, as 90% of our trade and 96% imports of fuel is carried out through sea. और जो सवाल उठा था शिप्स का, यस, पाकिस्तान को कार्गो शिप्स चाहिए, पाकिस्तान को फेरी सर्विस चाहिए, और पाकिस्तान कार्गो शिप के लिए भी अकील रेड्डी साहब ने कहा है कि मैं डिस्कस करूँगा। Cpec का जो मेन कंपोनेंट है वो तो गवादर है, सो गवादर को फोकस करना चाहिए, गवादर के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी आनी चाहिए, और जो वहाँ पे इश्यूज़ हैं उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। Masood, member of Proud to be Brand Pakistan, terming the said meeting as informative, noted that many aspects that are not highlighted in Pakistan were discussed here. जो पाकिस्तान में हमारी ऐसी चीज़ें जो हम हाईलाइट नहीं करते, वो इस फोरम पे आके हमें बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे होता है।